Today is the day on of spoken English, and every single day we will try to lots of practice because we all know practice makes a man perfect, and we will try to do lots of practice. हम हर दिन बहुत सारा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश ग्रामर रूल को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हर दिन जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल हैव अ आइडिया हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ वी कैन be a master in English language. So today is the day on, and in this day we will cover about is MR. Is MR. So is MR means simple sentences when we want to give a information about myself, about another self, yeah, anything. That time we use is MR. But we have to know where हमको ये जानना होगा किसके साथ क्या यूज होता है। तो देखिए आई के साथ हमेशा एम होता है कि आई एम अ डॉक्टर, I am a student. I am a boy. I am a son. I am a grandson. I am a brother. उसके बाद होता है you are. You are a doctor. You are a lawyer. You are a postman. You are a good man. You are a boy. You are honest. मीन्स आप एक ईमानदार हो। तो यू प्लस आर होगा, यू के साथ हमेशा आर आएगा। उसके बाद हम एक नाउन लगाएंगे कि यू आर हिज सिस्टर, यू आर हिज ब्रदर, यू आर हिज सन, you are a brilliant, you are a intelligent, you are a honest man. He is. He is a doctor, he is a lawyer, he is a brother, and he is a father, and he is a means businessman. इसी तरह शी के साथ हमेशा शी इज आता है। शी इज माई सिस्टर, शी इज माई कजन, शी इज अ पोटैटो सेलर, शी इज अ एप्पल सेलर, शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज माई ग्रैंड मदर, शी इज माई मदर। तो याद रखिएगा कि शी के साथ हमेशा इज आता है। वी आर, वी जो है जब हम अपने बारे में सबको बोलते हैं कि वी आर डॉक्टर, वी आर अ devotee of Allah subhanahu wa ta'ala, we are created by Allah subhanahu wa ta'ala, we are student, we are happy, we are sad। तो जब भी हम अपने बारे में सबको बोलना होता है तो हम उसको वी आर बोलते हैं। इसी तरह दे आर अ प्लेयर, वो सब लोग खिलाड़ी है। दे आर रिच पीपल, वो सब लोग अमीर लोग हैं। दे आर ब्रिलियंट, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। दे आर टैलेंटेड, वो बहुत ही शातिर है। दे आर क्लेवर, दे आर पोर, वो लोग गरीब हैं। दे आर होपलेस, दे आर हैप्पी। उसके बाद नेम के साथ जो होता है, जब भी हम किसी बंदे का डायरेक्ट नेम को यूज करेंगे तो उस वक्त हम भी इज लगाएंगे। राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल इज अ लॉयर, राहुल इज अ हैप्पी, राहुल इज हैप्पी, राहुल इज अ अनहैप्पी, राहुल इज सैड, राहुल इज ड्राइवर, राहुल इज अ ड्राइवर, Rahul is a businessman. Rahul is a job employment. Rahul is an IS officer. Rahul is a police officer. So इस तरह यूज होगा। तो इंग्लिश के अंदर ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिएगा।
और हम आपको दिखलाएंगे कि सिर्फ हम ग्रामर रूल को नहीं सिखलाएंगे, हम आपको 1 to 1 प्रैक्टिस करना सिखलाएंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे और हम खुद भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहे और हमारी इस प्रैक्टिस सीरीज को एंजॉय कीजिए। हम जितना बोलेंगे तो आपसे जितना हो सके ट्राई टू स्पीक, मीन्स एक एक चीज को लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। यू आर माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई ब्रदर, you are my teacher, you are my business partner, you are my home security guard. He is my home security guard. He is my driver. He is my employee. I am in my room. I am in the market. I am in Assam. I am in India. I am in shop. I am in my house. And you are very kind. He is very kind. She is very kind. We are very kind. They are very kind. And Ram is very kind. He is very tall. Ram is very tall. Sham is very tall. Rahul is very tall. Afzad is very tall. Kabir is very tall. Humayun is very tall. Akbar is very tall. I am a tall. इस तरह हम पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमको ये बोलना हो कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, you are not a doctor, she is not a doctor, he is not a doctor, we are not a doctor, they are not a doctor, they are not doctor, we are not doctor, he is not a doctor, he is a postman, he is not a businessman, he is a driver, he is not a fish seller, he is a potato seller, he is my brother, he is not my uncle, she is my cousin, she is not my auntie, he is my uncle and he is not my cousin. सो आपको सिर्फ जो इज एम आर है उसके बाद नॉट लगाना है। नॉट लगाने से फिर यह हो जाएगा कि हम नेगेटिव सेंटेंस को पाएंगे और कह सकते हैं कि यू आर नॉट अ ड्राइवर, you are not a driver but he is a doctor, you are not a businessman but you are a medicine seller। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक सेंटेंस को पॉजिटिव रखिए, उसके साथ आप बट लगाकर दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ दीजिए। आई एम अ टीचर बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ पॉलिटिशियन बट आई एम नॉट अ टीचर, I am a businessman, but I am not. I am a businessman, but I am not a employee. I am a government job, but I am not a job employment. He is a lawyer, but he is not a doctor. He is your brother, but he is not my uncle. You are my friend, but you are not a friend of my brother। तो आप एक के साथ दूसरा जोड़ने की कोशिश कीजिए, इससे आपका जुबान में जो फ्लुएंसी आएगी, आपका जुबान जितना बोलेगा उतना आप बेहतर बोलोगे। हम जब भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं
तो हमारे साथ कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि हम मतलब बोलना चाहते हैं मगर बोलने के दौरान हम हेजिटेशन फील करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हेजिटेशन। एंड व्हेन आई speak my mother tongue, that time I speak with fluent, and that time I don't use any kind of filler word. But when I speak English language, so that time I use filler word. So what is the solution for that? That is solution for you. You have to practice small sentences a lot. When you will speak small sentences a lot, when you will speak small sentences in a good way and with confidence, automatically you will not feel hesitation during your conversation or talking. So this is the technique. सो आपसे जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इजी मार में मतलब क्वेश्चन करना हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक माँ हो, क्या तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम एक अपील सेलर हो, क्या तुम जॉब करते हो, जॉब एम्प्लॉय हो, तो सिंपल में पूछना है। अगर किसी की प्रोफेशन के बारे में पूछना है तो हम उस कैसे मतलब कहेंगे, तो उसका तरीका हम आपको बतलाते हैं। क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू a doctor? Are you a doctor? Are you a job employment? Are you a potato seller? Are you a businessman? Are you a security guard? Are you my friend? Are you my enemy? Are you my brother? Am I? Am I a lawyer? क्या मैं एक वकील हूँ? Am I a politician? Am I a potato seller? Am I a businessman? Am I a teacher? Am I a father? Am I a brother? Am I a cousin? Am I your friend? Am I your brother? Am I your father? Am I your teacher? Am I your हेल्पर? सो आप एक सेंटेंस को जितना चाहे आप बोलने की कोशिश कीजिए। इट विल हेल्प यू टू ब्रेक योर माउथ एंड इट विल हेल्प यू टू ब्रेक योर हेजिटेशन, because for removing hesitation only one way, by that you can remove your hesitation and you can be fluent. और पूछिए, क्या तुम डॉक्टर हो? तो अगर सिंपल वे में पूछना हो तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो हम आज हमने सीखा तीन चीजें। इजी मार्क, तो इजी मार्क का सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस जहां पर हम नाउन के बारे में पूछना हो या किसी के प्रोफेशन को जानना हो तो हम इजी मार्क के जरिए पूछते हैं। या हम सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो इसी फॉर्म में बनाते हैं। मीन्स आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर? यू आर डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर? He is my brother. He is not my brother. Is he my brother? He is my teacher. He is not my teacher. Is he my teacher? She is my mom. She is not my mother. Is she my mother? She is my grandmother. She is not my grandmother. Is she my grandmother? He is my grandfather. He is not my grandfather. Is he my grandfather? He is a politician. He is not a politician. Is he a politician? एक सेंटेंस को आप थ्री फॉर्म में यूज करो। जब आप थ्री फॉर्म में यूज करोगे तो फिर देखना आप हेजिटेशन नहीं करोगे। And I also suggest you do lots of practice in this way. First, make positive sentence. Second, make a negative sentence, and third, interrogative sentence. Yeah, either you can ask a interrogative sentence first. After that, you can ask positive and negative as like, "Are you a doctor?" Yes,
I am a doctor, but he is not a doctor. Are you a cookman? Yes, I am a cookman, but he is not a cookman. Are you the owner of this hotel? Yes, I am the owner of this hotel, but he is not a owner of this hotel. He is a employee of this hotel. Are you happy in your life? Yes, I am happy in my life, but he is not a happy in his life. Are you a school teacher? Yes, I am a school teacher, but he is not a school teacher. He is a apple seller. Are you Are you a lawyer? Yes, I am a lawyer. And he is not a lawyer, but she is a nurse. Are you a doctor? No. No, I am not a doctor. I am a nurse in this hospital. And are you a security guard of this house? Yes, I am security of this house. तो इस तरह आप बोलने की कोशिश करेंगे जितना आप बोलोगे and it will help you to become a fluent and everything depend on your practice. When you will do practice a lot, automatically you will learn and you will express yourself in a good way, and within a short time and within a short period you will find the result. When I started journey of English language, so that time always I was curious about practice, about doing practice. Sometimes I also feel boring, but I was doing. But now I can speak, so I also tell you when I can do it, you can do also. So for today and tomorrow we will come with a new topic. I hope this video was helpful for you. Don't forget to share, comment, and subscribe our channel. This channel will help you to become a good English speaker. This channel will give you value. This channel will learn in English language. Please comment us in our comment sector. Thank you for watching our video.